I have already asked ना. Complete the process, Sarika. एक मिनट रुका। पूनम, जीव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? अपर्णा, जीव कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित रहती है। Ask me, Sunna Punam. अपर्णा, what is not found in animal cell? Well, cell wall of cellulose not found in animal cell. अपर्णा, जीव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? सेल वेल अनुपस्थित रहता है जीव कोशिका में से। अनुपस्थित क्या नहीं पाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्चुअली हम ये जानबूझ के हमने किया। क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल वही हिंदी लिखा कि जो मैंने लिखा और इंग्लिश ये लिखा था। ये मैं जानबूझ के दिखाना चाह रहा था। आई कैन सेंड यू द पिक्चर इफ आई फाइंड, आई विल सेंड यू द पिक्चर कि दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज गिवन। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ये ऐसे ही बोला जाता है क्या अनुपस्थित रहता है, और इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही पूछा जाता है व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। Okay, come to open your last chapter. Which chapter is going on? 15. May have. The next sentence of may have is, तुमने भी यही महसूस किया होगा। तुमने भी यही महसूस किया होगा। It is Sarika's go because she could not make the last sentence. जी, तुमने भी यही महसूस किया होगा। You may have felt this thing. अब You यहाँ may पे have melt even this thing. हाँ, ये छोटा सा शब्द हम देने के लिए ये हमने सेंटेंस रचा है। I created this sentence to introduce this small word. अब पूछो पूनम से कि पूनम अगर तुम मेरी जगह होती तो। Okay, Poonam, if you were me, how would you make this sentence? अपर्णा, If I were you, Sarika, I would like to say तुमने I would make Punam. okay. पूनम वो वुड लाइक का प्रयोग कर रही है इसमें, जो कि गलत है। वो अलग चीज है वुड लाइक। ये नीचे आएंगे ये लोग, मैं निकल रहा हूँ। Okay, bye. Sir, I'm actually not ready. Sarika, I'm passing to you. Actually, my son is going. एक मिनट बाहर आओ रुकना. If okay, see him Take your off. time. See him off, no problem. Go. going for 2 days ना sir in friends marriage. See him off. See him off. जाओ उसको अच्छे से विदा करो Yes. और म्यूट करके जाओ, नहीं तो हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। Aparna, how would you make this sentence if you were Sarika? If I were a Sarika, I would make sentence like this. You may have felt. You may have felt same. The same. Same. You may have felt the same.
Sarika, speak. जी, you may have felt the same. तुमने भी यही महसूस किया होगा. Let's Sir, have in हाँ, earlier sentence na, I am little confused about the answer because I forgot all the things. So I'm not sure because I am little confused in mitochondria. I think all these things are present in a cell, but why they means give the option इनमें से कोई भी नहीं. So I'm little bit confused. Means don't be disappointed. Just after the class, Google it and share it. okay, sir. Okay, let's use this word. Are you have made the same. You may have made the same. चलो बदलते हैं. अरे छोटी बुआ may have made the same. छोटी बुआ ने भी यही बनाया होगा. Let's change the verb and subject. मतलब महसूस करने की जगह हम मेड लगा रहे हैं. हम इसका प्रयोग कर रहे हैं. अच्छा, सेम का. अच्छा अच्छा. The same. You may have sung the same. तुमने भी सेम गाया होगा on the Republic Day. तुमने भी सेम. You have sung the same song on the Republic Day. तुमने भी यही गाना गाया होगा Republic Day पे. I guess you may have asked the same. मुझे लगता है तुमने भी वही पूछा होगा. And they may have told the same. और उन्होंने भी यही बताया होगा. You have made the reveal. No, you have revealed the same. You may have worn the same. तुमने भी यही पहना होगा. Okay, next sentence is You may have thought the same. तुमने भी वही सोचा होगा जो मैंने सोचा. if some more sentences come in your mind, please share in WhatsApp. उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा. Sir, should I make? You made the last sentence. No, you could not make. Okay, give this chance to Poonam. Poonam, who has got to make this sentence? I have got to make this sentence. He may have thought something. अब अपर्णा से पूछो. अपर्णा, तुम मेरी जगह होती तो. Aparna, if you or me, how would you say this sentence? How would you make this sentence? If I were you, I would make the sentence like that. She may have thought something else. Something else. She may have thought something and else. Arey, you have given now, but I forgot. Sarika, how would you make this sentence if you were Aparna? See, sir, if I was
I were Aparna Di, I would make this sentence like this. He may have thought something or other. अब या यहाँ something else. यहाँ पे तो लगने से एक शब्द बढ़ रहा है जो हमने वहां लिखवाए होंगे। ये दा लगा रहे हैं हम यहाँ। ये शब्द तुमों की जुबान पे रखवाने के लिए हमने सेंटेंस का निर्माण किया है। He may have thought something or the other. उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। Sarika, speak as it is. Later on Aparna, then Poonam. Later on we will change the verb. जी. He may have thought something or the other. उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। अपर्णा दी। You are mute, Aparna. पूरा एक्सप्रेशन के साथ बना रहे। I made the sentence with the sentence and I was mute. He may have thought something or the others. उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। He may have thought something or the other. Next round. Your mama went to Switzerland. She may have brought something or the other for you. अरे तुम्हारी मम्मा स्विट्जरलैंड गई थी, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लाई होंगी। Like this. Who is ready? Sir, I am ready. She may have prepared something on other when she knew कि you are coming. I also उन्होंने thought कुछ ना कुछ हाँ तो बनाया होगा जब उन्हें पता चला कि तुम आ रहे हो। my mama may have sent something or others for my birthday. कुछ ना कुछ तो मेरे बर्थडे में भेजा ही होगा मेरी मम्मी ने। My brother may have planned something or the other for us. मेरे भाई ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होगा। अरे it was Rakhi. Your brother may have gifted something or the other. It is not possible. You are denying. Why are you lying? अरे राखी थी, भैया ने कुछ तो कुछ गिफ्ट दिया ही होगा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम इनकार कर रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। Rakhi tip. Google has taken Rakhi tip. कुछ ना कुछ तो राखी। Poonam is getting network issue. Yes, sir. She must be having phone calls. Should we conclude? It is 12:50, 1 o'clock. Yes, sir. Okay. Thank you for joining. See you tomorrow. Thank you, sir. Have a nice day. Bye bye. Bye bye.